Hello students. In this lecture we will discuss radial and transverse acceleration. In last lecture we discussed radial velocity. Radial velocity means velocity along the radius vector OP. So similarly radial acceleration means the acceleration along the radius vector OP. जो radius vector OP है इसकी direction में जो acceleration है this is known as radial acceleration. और acceleration means rate of change of velocity. So it means we can say the rate of change of velocity along the radius vector OP is the radial acceleration. ठीक है. अब इनिशियली पार्टिकल का था P पॉइंट पर, देन T प्लस डेल्टा T टाइम पर पार्टिकल का है Q पॉइंट पर. तो इसका मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना होगा? Q पॉइंट पर वेलोसिटी माइनस ऑफ P पॉइंट पर वेलोसिटी. So we can say the rate of change of velocity along OP means this is limit delta T tends to 0. Change of velocity means Q point per velocity minus P point per velocity. अब Q point per velocity तब वो जो OQ की डायरेक्शन में तो वेलोसिटी आपके पास U प्लस डेल्टा U और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी इज V प्लस डेल्टा V. बट हमें चाहिए OP की डायरेक्शन में तो U प्लस डेल्टा U का OP की डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए बिकॉज U प्लस डेल्टा U OP के साथ में एंगल बना रहा है डेल्टा थीटा. सो इट्स कंपोनेंट इज U प्लस डेल्टा U cos ऑफ डेल्टा थीटा प्लस V प्लस डेल्टा V OQ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो OP के साथ में कितना एंगल बन जाएगा? डेल्टा थीटा तो ऑलरेडी और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो 90 और प्लस कर दो तो इट मींस V प्लस डेल्टा V cos ऑफ 90 प्लस डेल्टा थीटा. दिस इज द वेलोसिटी एट Q माइनस वेलोसिटी एट P अलोंग OP. अब OP की डायरेक्शन में एक वेलोसिटी तो U रेडियल वेलोसिटी तो U का कंपोनेंट इज U cos 0 प्लस उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में V तो V का कंपोनेंट V cos 90 तो वेलोसिटी एट Q माइनस वेलोसिटी एट P अपॉन डेल्टा T. Now this can be written as limit delta T tends to 0 U plus delta U cos of delta theta but cos 90 plus delta theta is minus of sin delta theta. So this is minus V plus delta V sin delta theta minus cos 01 to U and cos 90 0 upon delta T. But again, if delta theta is small, the cos delta theta is 1 and sin delta theta is delta theta. Substitute. So cos delta theta की जगह तो 1 आ जाएगा. Sin delta theta means delta theta. So this is limit delta t tends to 0. U plus delta U into 1 minus V plus delta V into delta theta minus U upon delta t. अब U से तो U cancel. तो ultimately this is limit delta t tends to 0. Delta U upon delta t minus V delta theta upon delta t minus delta V upon delta t into delta theta. But when delta t tends to 0, so delta theta also 0. तो ये टर्म तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगी. क्या बचेगा? डेल्टा U by delta t and delta t tends to 0 means du by dt minus V delta theta upon delta t and delta t tends to 0. This is d theta by dt. But U means velocity along OP और OP की डायरेक्शन में वेलोसिटी मींस रेडियल वेलोसिटी व्हिच इज r dot dr by dt. सो U की जगह पुट कर दें dr by dt. सो दिस इज d by dt ऑफ dr by dt माइनस V मींस OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी और OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था? ट्रांसवर्स वेलोसिटी व्हिच इज r theta dot r d theta by dt. सो V की जगह r d theta by dt into 1 d theta by dt आपका ऑलरेडी. सो अल्टीमेटली दिस इज d2r by dt स्क्वायर माइनस r d theta by dt का होल स्क्वायर और दिस कैन बी रिटन एज r डबल डॉट माइनस r theta डॉट स्क्वायर. नेक्स्ट इज ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन मींस acceleration which is perpendicular to the radius vector OP. Radius vector OP के perpendicular direction में जो acceleration है this is the transverse acceleration. और acceleration means again rate of change of velocity. तो rate of change of velocity which is perpendicular to the radius vector OP is known as transverse acceleration. ठीक है. Now just हमने निकाला भी है radial acceleration. तो radial acceleration means along OP की डायरेक्शन में acceleration. अब हमें चाहिए OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है तो इसका मतलब एंगल में 90 डिग्री का चेंजेस हो जाएगा. ठीक है. तो जहां जहां भी cos था एंगल में 90 डिग्री का चेंज है तो cos की जगह sin और sin की जगह cos आ जाएगा. तो जहां जहां भी cos था सब जगह क्या करते हैं? sin. So this is that this is limit delta t tends to 0. Rate of change of velocity is U plus delta U sin delta theta plus V plus delta V sin 90 plus delta theta means velocity at Q
which is along perpendicular to OP minus velocity at P. This is u sin 0 plus v sin 90 upon delta t. Okay. But sin 90 plus delta theta is cos of delta theta. So this is limit delta t tends to 0. U plus delta u sin delta theta plus v plus delta v sin 90 plus delta theta is cos delta theta minus sin 0 is 0 and sin 90 is 1. So minus v upon delta t. But again, if delta theta is small, so cos delta theta is equal to 1 or sin delta theta is equal to delta theta. So this means that this is limit delta t tends to 0, u plus delta u sin delta theta means delta theta plus v plus delta v cos delta theta is 1 minus v as it is upon delta t. Now this can also be written as limit delta t tends to 0, u delta theta upon delta t plus delta u upon delta t into delta theta plus v se v cancel and delta v upon delta t. But for delta t tends to 0, delta theta upon delta t is d theta by dt. तो ये तो ये u d theta by dt और जब delta t tends to 0 तो delta theta भी 0 तो ये result completely 0 plus delta v by delta t and delta t tends to 0 is dv by dt. But u means along OP velocity means radial velocity. तो ये तो जाएगा आपके पास dr by dt. So this is dr by dt into d theta by dt plus dv by dt. v means velocity which is perpendicular to OP और OP के perpendicular velocity is transverse velocity which is r d theta by dt. तो v की जगह पुट कर दें r d theta by dt. Now differentiate, so we get 2 dr by dt d theta by dt plus r d2 theta by dt square, and this can be written as 1 by r d by dt r square theta dot, and this is the transverse acceleration.